Okay, dear students, how are you? Now, once again, we have to start from the same topic. We are going through the topic paintings, and after paintings, then we have to do on music. On music, from prelims point of view, you may find some questions, but normally on music, you will not find any challenging question from mains point of view. On paintings, you can find a question from mains point of view. So let us start with the 5 MCQ questions first. We have to start with the 5 MCQ questions, then we have to return to the topic again. Let us start. Question number first. Consider the following architectural features of the Mughal period. Point 1, use of white marble. Point 2, use of Pitradura. Point 3, construction of multifold arcs. Which of the above features belong to Jahangir period? Which features belong to the architecture under Jahangir? Architecture under Jahangir. Choice A 1 and 2 only, choice B 2 and 3 only, choice C 1 and 3 only, and choice D 1, 2 and 3. Just try to find out. Delhi. How can you are brilliant people, how can you make such a mistake? How you will select D? I have told you that this construction of multifold arc, so that was introduced under Shah Jahan. Here the question is Jahangir. How can you choose choice number D? Your answer should be choice number A, 1 and 2. Is the A answer? Yes. So my students, be particular about such things. Question number 2. Which of the following regional styles influenced Mughal architecture? Point 1 Bengal, point 2 Gujarat, point 3 Malwa. Choose the correct code. मतलब मुगल आर्किटेक्चर किस रीजनल आर्ट से एसिमिलेट किया है? तो इसमें आपको 3 चॉइस दिए गए हैं, बंगाल, गुजरात एंड मालवा. यू हैव टू चूज. चॉइस नंबर बी. बी नहीं, ऑल 3. डी. मालवा भी, गुजरात भी, बंगाल भी, ऑल 1, 2, 3 शुड बी द आंसर. डी. डी. डी फॉर दिल्ली. हैव दे सिलेक्टेड डी? यस, गुड. क्वेश्चन नंबर 3. हु अमंग द फॉलोइंग रिसरेक्टेड द रेड सैंडस्टोन? अरे रीस्ट्रक. हु हैज रिटन रीस्ट्रक? Restruck the red sandstone tomb of Sheikh Salim Chishti with white marble. मतलब जो शेख सलीम चिश्ती का जो टॉम था वो पहले रेड सैंडस्टोन में था, उसको व्हाइट मार्बल में किसने ट्रांसफॉर्म किया, किसने तब्दील किया? सो यू हैव टू चूज चॉइस ए अकबर, चॉइस बी शाहजहां, चॉइस सी जहांगीर एंड चॉइस डी दारा शिकोह. Jahangir, yes. Question number 4. Which of the following factors contributed to greater architectural activity during Mughal period? Point 1. During Mughal period, more resources were mobilized than in the previous period. 2. Mughal rulers displayed a personal interest in architectural construction. Point 3. For the first time, the design of monuments. डिजाइन ऑफ मॉन्यूमेंट क्या होता है? एक मॉन्यूमेंट होता है. डिजाइन ऑफ मॉन्यूमेंट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड पॉइंट 4 आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज इंस्पायर्ड बाय पर्शियन स्टाइल. मतलब आपके सामने 4 चॉइसेस दिए गए हैं. ड्यूरिंग मुगल पीरियड मोर रिसोर्सेस वर मोबिलाइज्ड देन इन द प्रीवियस पीरियड. देन ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड the previous period. 2. Mughal rulers displayed a personal interest in architectural construction.
Point 3, for the first time the design of monuments was introduced during this period. And point 4, architectural construction during this period was inspired by Persian style. अब 4 चॉइस दिया गया है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप गौर से चॉइस को पढ़ना और करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करने की कोशिश करना. D. No, that was inspired by Persian style as well. Yes, D is the correct answer. मतलब दोनों का एसिमुलेशन है, परंतु पर्शियन स्टाइल से भी इंस्पायर है, इंडियन स्टाइल से भी इंस्पायर है और पर्शियन स्टाइल से भी इंस्पायर है, इंडो इस्लामिक जिसको बोलते हैं. Which of the following rulers built the मोती मॉस्क ऑफ दिल्ली? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां एंड डी औरंगजेब. Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. What is the answer, Mr. Ankur? D. Choice number D. Yes, correct answer. My students, I am placing one question to you people and you people are supposed to answer my question. Question is, yesterday I have just invited for this question. कि जहांगीरी महल is situated. Jahangiri Mahal means कि Jahangiri Palace situated in which of the following forts of Akbar? Forts of Akbar. Jahangiri Mahal is situated in which of the following forts of Akbar? Be clear about choice. Choice A, Agra. Choice B, Fatehpur Sikri. Choice C, Delhi. Choice D, Allahabad. नहीं, Lahore. Agra. Yes, good. You have done. One question more, my students, from my side. Then I will be confident कि yes, you will do the things. Question. कि at which of the following places Akbar did not build any fort? At which of the following places Akbar did not build any fort? Answer, choice number A, Delhi, Agra, C, Allahabad, D, Attock. My students, you have to find out the right answer. This is the last one question I have given to you. Be fast. Delhi, Agra, Allahabad and Attock. A. Yes, good.
Okay. Now you have just qualified my test now. That's okay. Yesterday I have given you some assignment to work. You have to make a comparative study of architectural monuments of Akbar with those of Shah Jahan. Have you done the work? Have you tried the question? Did you get success? Please inform me. क्या आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया था? कंफर्टेबली आपने क्वेश्चन को कर लिया? प्लीज आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि कल के क्वेश्चन पर आपका कैसा रहा. Yes, sir. Anas. Yes, hai? Yes. Okay, good. Because I have already on separately I have mentioned about Akbar and I have separately mentioned about Shah Jahan. Even the political social aspect as well, political cultural aspect as well. So I think you people may have make a comparative study of the monuments built by Akbar with those of Shah Jahan. So that's quite commendable, my students. You are performing well. Now our class is in the last phase, so I expect you such sort of excellence. अब now move to other topic, you know. Medieval paintings, but earlier than that, in architecture has been finished and we were doing the paintings, you know. So we were talking about the Akbar's paintings, you know, Akbar's paintings. But now, after Akbar's paintings, you know, the portraiture painting, the miniature painting, and the fresco painting. Now, suppose you can say that someone is going to ask you the question during Akbar's period, which sorts of paintings was more prominent, you know, more prominent. Choice A, Akbar's period. Try to find out my question. During Akbar's period, which sorts of painting was more prominent? Choice A, you know, fresco painting, or mural painting, you can say. Mural painting, both are the same. B, miniature painting. C, portraiture painting. D, none of the above. My students, you should try to find out the answer. Which of the following is the correct answer? Fresco paintings, miniature paintings, portraiture paintings, none of the above. Choice A, B, C, D. Be fast. B. Choice number B is the correct answer. Okay. गुड. मिनिएचर पेंटिंग. यस, आप लोग समझ रहे हो. सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि जो हमने हॉरिजेंटल मेथड से आपको लाया सारे मतलब हिस्ट्री के सारे सेगमेंट्स में, उस हॉरिजेंटल मेथड को आपने अच्छे ढंग से एप्रोप्रिएट किया. आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो. मुझे बड़ी खुशी हो रही है जैसे ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो. इसमें जब तक अपनी खुद की आईक्यू मजबूत नहीं रहेगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता. आप कोई पोर्ट्रेचर पेंटिंग कर देंगे, कोई फ्रेस्को पेंटिंग कर देंगे. आपने चुना मिनिएचर पेंटिंग. अब हम आते हैं जहांगीर में. यस, गिरी पूछ रहे हैं सर कि अबाउट सन टेम्पल ऑफ मोधेरा एंड कोणार्क टेम्पल. यस, अबाउट that is a sun temple. Yes, during ancient period. Part 2, in Modhera also and Konark. Modhera near Mandsaur and then Konark in Odisha, you know, just near Jagannath temple, you know.
So what is the query? Yes, this is the Sun Temple. So in India, you can say कि thousands of the temples are there, thousands and thousands of temples. Paintings under Jahangir. Paintings under Jahangir. Do you know कि जहांगीर वॉज अ ग्रेट कन्नौशर हिमसेल्फ. ग्रेट कन्नौशर मीन्स कि वो खुद ही एक बड़ा एक्सपर्ट था पेंटिंग्स का. मतलब जहांगीर यूज टू मेक द स्टेटमेंट कि इफ अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट और सम आर्टिस्ट आर पोर्ट्रेइंग सम पेंटिंग, so it is on the basis of मतलब some artists portraying a single painting together. So after observing the painting, I can very well surmise कि which part of the painting has been portrayed by which artist. अब it was a great expertise, you know, कि भाई जहांगीर कहा करता था कि अगर कुछ कलाकारों ने मिलकर किसी चित्र को बनाया है तो मैं चित्र को देखकर बता सकता कि चित्र के किस भाग को किस कलाकार ने बनाया. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. दूसरा कि जो जहांगीर की पेंटिंग है वह जो जहांगीर की पेंटिंग है वो जहांगीर की पेंटिंग पर थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जहांगीर के टाइम में पेंटिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि डिक्लाइन इन मिनिएचर पेंटिंग, डिक्लाइन इन मिनिएचर पेंटिंग इसको कहते हैं लघु चित्रकारी. जो एल्बम वाली पेंटिंग थी वो एल्बम वाली पेंटिंग का डिक्लाइन हुआ और ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट्रेचर पेंटिंग. जो पोर्ट्रेचर पेंटिंग्स है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा. जैसे अब जहांगीर के टाइम में यू विल फाइंड द सिंगल वन एग्जांपल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड दैट इज तुजुक ए जहांगीरी which was an autobiography written by Jahangir himself, Tujuk-e Jahangiri. So this was portrayed as the miniature painting. Otherwise all the other paintings are portraiture paintings. And second one thing you find under Jahangir two important artists was Abul Hassan and Ustad Mansoor. Abul Hassan and Ustad Mansoor. Ustad Mansoor was a great expert of the nature and animal. मतलब उस्ताद मंसूर preferred to make a portrayal of nature and animals. So nature and animals became the important subjects in the paintings under Jahangir. This is the important thing. Second one thing I have to inform you कि Jahangir was at that time he was widely impressed by the Persian monarch. He was Shah Abbas the first, who was his personal friend. So in the Mughal court, the paintings were inspired by the political factor as well. For example, the portrayal of court, portrayal of war scenes, portrayal of hunting scenes, portrayal of the proceedings of the court. So all art became the subject of the paintings, you know. Even sometimes the foreign relations were being displayed through paintings. Here you will find an example of during the period of Jahangir. The artist of Jahangir made a portrayal of the Jahangir and Shah Abbas the first, both the kings.
embracing each other together. मतलब both the kings are embracing each other in a painting and the whole globe is just lying beneath their feet. So it was symbolizing that कि both are the two great monarchs of the world. मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहांगीर के जो चित्रकार थे उन्होंने विदेश नीति को भी अपने पेंटिंग्स में व्यक्त किया है। कैसे? तो शाह अब्बास द फर्स्ट पर्शियन मोनार्क है। आपको याद होगा कि ईरान से तो इंडिया का हमेशा सफावी डायनेस्टी से, सफावी रूलर से इंडिया का रिलेशन रहा है। कैसे हुमायूं को उसने हेल्प किया था, आपको याद होगा, शाह तमास द फर्स्ट। और शाह अब्बास द फर्स्ट है वो जहांगीर का कॉन्टेम्पररी रूलर है। तो जहांगीर को उससे दोस्ती, हालांकि जहांगीर के साथ उसने धोखा ही किया है, उससे कांधार छीन लिया है, लेकिन उस समय दोनों के बीच एक अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्ती थी। तो मैं आपको बताऊं कि जहांगीर सेंट वन आर्टिस्ट टू द कोर्ट ऑफ पर्शियन मोनार्क। हिज नेम वाज शाह अब्बास द फर्स्ट, सो ही सेंट द स्पेसिफिक आर्टिस्ट टू पर्शियन मोनार्क with the specific objective that this artist has to bring the portrayal of the Persian monarch and his nobles. So पर्शियन मोनार्क और उसके नोबल्स के चित्र उतार कर लाने के लिए उसने उस चित्रकार को भेजा था। कौन था वह चित्रकार? वह चित्रकार था बिशन दास। बिशन दास was the artist who was sent to Persian court in order to bring the portraiture of the Persian monarch and his nobles. तो एक चित्र में जहांगीर के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने दिखाया कि शाह अब्बास द फर्स्ट और जहांगीर दोनों एक दूसरे को गलवाही डाले हुए हैं, उनके पैरों के नीचे ग्लोब है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि दोनों शासक दुनिया के दो बड़े मोनार्क्स हैं। ये दोनों जो रूलर्स हैं, ये दोनों रूलर्स दुनिया के दो बड़े मोनार्क्स हैं। सो दैट वाज बीइंग सिंबलाइज्ड एट दैट टाइम। ओके, सो दैट इज द पॉइंट हियर। और एक चीज अब मैं बताना चाहूंगा कि अंडर जहांगीर पेंटिंग्स केम अंडर यूरोपियन इन्फ्लुएंस। पोर्ट्रेचर पेंटिंग तो पहले से ही चली आ रही थी, टेक्निक ऑफ फॉरशॉर्टनिंग अकबर के टाइम में चली आ रही थी। और जहांगीर के टाइम में आपको दिखेगा कि कुछ जो क्रिश्चियन थीम्स थे उसको भी पेंटिंग का सब्जेक्ट बनाया गया, जैसे इशू यानी जीसस क्राइस्ट, हिज मदर मरियम, इशू एंड मरियम, द पोर्ट्रेचर ऑफ इशू एंड मरियम। Then the winged angels, ऐसे एंजल्स जिनको पंख लगे हुए, जिसको कहते हैं पंख लगे हुए देवदूत, winged angels. The you can say thundering, the portraiture of thundering, the paintings of the thundering, मैंने चमकती हुई बिजली की भी तस्वीर ली जाती थी, आकाश धरती। So you'll find that the Christian subjects also became the subject of the Jahangir's paintings, you know, and the paintings during Jahangir period. So in this way, the paintings flourished too much under Jahangir. Okay. Up here, I am giving you some question. सर बच्चों काफी बफरिंग का इशू है। अब इसमें मैं क्या करूं, कैसे करूं? व्हाट इज द वे? विल दे वॉच द वीडियो इन रिकॉर्डेड फॉर्म? वो तो उनको बाद में मिल जाएगा। इन साउंड इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। So what is the way? I can do nothing. I am helpless here. In buffering, I can do nothing. You people have to tolerate this, and suppose you find a difficulty, so in recorded form you have to watch the video again. So I am just suggesting it. So throw light on
light on Mughal paintings from the period of Akbar to Jahangir. From the period of Akbar to Jahangir. My friends, in Jahangir, one more style. I have missed it, so I am just repeating here. In Jahangir, you will find that this trend started from the period of Jahangir, which became prominent under Shah Jahan. What was the trend? So, divine right of kingship. There was the portrayal of divine right of kingship. डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप का मतलब जो किंग के आसपास इर्द गिर्द निम्फ बनाया जाता था, आभा मंडल, जिसको आभा मंडल बोलते हो, निम्फ बनाया जाता था किंग्स के फेस के चारों तरफ. सो दैट बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग्स. इट मीन्स कि द मुगल मोनार्क्स वर गिवन सम, और द मुगल मोनार्क्स, द स्टेटस ऑफ मुगल मोनार्क्स वाज गिवन द सम एलिमेंट्स ऑफ डिविनिटी, कि ही वाज जस्ट लाइक the god. So they were given the elements of divinity to the paintings, to the Mughal monarchs. So in this way you can say कि जहांगीर के टाइम में शुरू हुआ और शाहजहां के टाइम तक चला. अब the paintings under Jahangir was reached up to its climax, because after that, during the period of Shah Jahan, this question we will try, throw light on the Mughal paintings, throw light on the evolution of Mughal paintings. Throw light on the evolution of Mughal paintings from the period of Akbar to Jahangir. मतलब अकबर के पीरियड से लेकर जहांगीर का पीरियड का ग्रेजुअल एवोल्यूशन होना है. So you have to move in this direction, you know. तो this point is clear, and I have to make you clear now. That is Mughal paintings from the period of Akbar to Jahangir. So let us do another part as well. Shah Jahan. During the period of Shah Jahan, there was the decline of paintings, because at the time of Shah Jahan, there was the portrayal of the, some you can say, or there was the paintings were made through the some golden work or some metal work. जैसे in place of colors, शाहजहां started to use metal for the portrayal of paintings. अब मतलब क्या होता था कि पहले जहां पर रंग का प्रयोग पेंटिंग्स में होता था, तो शाहजहां ने रंग के बदले सोने के बुरादों का प्रयोग करना शुरू किया. तो पेंटिंग्स का डिक्लाइन शाहजहां के टाइम में हो गया. एंड डोंट स्पीक अबाउट द पेंटिंग्स अंडर औरंगजेब, बिकॉज इन ट्रू सेंस पेंटिंग्स अंडर औरंगजेब वाज बैंड, बिकॉज औरंगजेब declared paintings an un-Islamic and he just banned the painting. So not to speak of the development of paintings or evolution of paintings under Aurangzeb. तो मुगल पेंटिंग्स का तो हिस्ट्री यही है. अब इसके बाद इसकी जो लेगेसी है, यहां पर देखो सल्तनत पेंटिंग्स, देन चौर पंचसी का स्टाइल्स, देन यू आर ऑब्जर्विंग एट द मुगल पेंटिंग्स, अकबर्स पेंटिंग्स, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन द जहांगीर्स पेंटिंग्स, features of Jahangir's paintings. Paintings during Shah Jahan and Aurangzeb. Hamjanaama. आईने अकबरी, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग, आईने अकबरी. खमसा, रामायणा,
that is became the subject of paintings. Religious tolerance, you will find here the religious tolerance, Ramayana, portrayal of Ramayana. Bali Badh, Bali, assassination of Bali. Shahnama. Shahnama. Regional styles. Of Rajasthani paintings. Here I have informed that Rajasthani paintings have a rich history that became more prominent during the 15th century. It placed a special emphasis on depicting nature, animals, birds and other subjects. That is the subjects of Rajasthani paintings. Major religious texts were also illustrated, including the famous Ragmala paintings. Ragmala. Sorry. The influence of Mughal paintings can be observed in Rajasthani paintings as well. After the decline of the Mughal Empire, various regional styles of Rajasthani styles flourished, such as the Mewar style, Ambir, Jaipur style, Bundi, Kota style and Bikaner style. Kishangarh style. Kishangarh is in near Jaipur, you can say. The Kishangarh style developed in Rajasthan and its surroundings areas was founded by Shaman Singh, a notable scholar and aesthete. He held a deep interest in Krishna Bhakti, devotion to Lord Krishna. The Kishangarh style placed a special emphasis on portraying heroines in Naika, with a focus on presenting different expressions and gestures in the relationship between Krishna and Radha. Bani Thani and Kishangarh miniature from 1750 at the National Museum, New Delhi. Krishna and Radha, opaque watercolor and gold on cotton, 1750. Mithila or Madhubani style. Manjusa style. Madhubani paintings, you know. कोहबर पेंटिंग्स. देखो मधुबनी जो पेंटिंग्स होती थी तो मधुबनी पेंटिंग्स आर मच फेमस. दैट इज फ्रॉम स्टार्ट इन 18th century. It was basically Madhubani paintings was associated with some erotic scenes as well. For example, Kohbar. Kohbar, you people don't know what is Kohbar. Actually, in Bihar, particularly in Madhubani district and Darbhanga, you will find that when there was the marriage between the bride and bridegroom. So, bride and bridegroom after marriage, they were just, you can say, they were supposed to lie together at a specific place after marriage. So, that is called Kohbar. So, where they were lying and you can say, and they were sleeping. So at the sleeping place, you know, some portrayal of paintings, and particularly it was erotic paintings. So that is called Kohbar. Kohbar paintings. Aripan. Aripan means that was the rice. Rice was mixed with color, red color and different colors. It was placed under, you can say, just at the doorstep. It was placed. So that is called Aripan. This is the part of Madhubani paintings, you know. Manjusa art, Madhubani paintings. Deccan style. Bijapur served as the main center of the Deccan style, although it also extended to Golconda and Ahmednagar. This style featured special paintings of Ragmala. Prominent patterns of this style included Ali Shah of Bijapur and his successor Ibrahim Shah. Early paintings of this style showed a clear influence of Persian art, and the costumes were influenced by the North Indian, especially Malwa style. जैसे ये पेंटिंग्स है, अब आप देखिए ये कैसे कंप्लीट कल्चर इंडिया का है. रागमाला इसका सब्जेक्ट है, जो कृष्ण लीला या कृष्ण राधा के संबंधों से, और उसको एक मुस्लिम रूलर
उस पेंटिंग्स का सब्जेक्ट बनाता है, और मुस्लिम रूलर जो अली शाह है बीजापुर का, वो पेंटिंग्स को प्रमोट करता है। ये कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया है। गुजरात स्टाइल, द गुजरात स्टाइल ऑल्सो नोन एज गुर्जर और गुजरात स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स depicts various elements such as mountains, rivers, oceans, earth, fire, clouds, horizon and trees. Paintings in this style were found in regions like Marwar, Ahmedabad, Malwa, Jaunpur, Awadh, Punjab, Nepal, West Bengal, Odisha and Myanmar. Indicating its widespread influence, Ragmala pictures were also created in this style, and it had an impact on the paintings of Mughal Emperor Akbar's time. Dr. Anand Kumar Swamy is credited with bringing this art style to prominence. Gujarat paintings, Gujarat paintings. Gujarat paintings. Rajput style, Mewar style, you will just observe here. Jaipur style, you people have to go through it. Bikaner style, Malwa style, that is not important in mains exam, that is in prelims, Yes, Rajput paintings are legacy of Mughal paintings, so you have to find the different regional centers. After disintegration of Mughal Empire, the paintings spread to the regional centers. So it is said that all the Mughal Empire declined or disintegrated, but Mughal culture spread to the regional centers. So that's why you find Bundi style, the Alwar school of paintings, Pahari paintings style, Basoli style, Guleri style, Garhwal style. From prelims point of view, I have given too much information. Jammu style, Kangra style, that's all. A music during Mughal period you have to find out. My students, I have to inform you, let us brief the music during Saltanat period and Mughal period. So in case of Saltanat period, you will come to realize that although music was not totally banned, music is supposed to be neither good nor bad. But in Islam, the music was normally discouraged. But in spite of that, you will find that even under Delhi Sultanate, the music was in the, you can say, very important form, and the music was being practiced by different sultans, or the music was patronized. So music holds a unique position in Islam as it neither considered inherently good nor bad. However, due to conservative elements and religious scholars, ulema looking down upon it, music faced some resistance. Nevertheless, music managed to flourish under the patronage of Turkish rulers. मतलब मैं आपको म्यूजिक के बारे में बताता हूं, याद ही करवा देता हूं, क्योंकि म्यूजिक में बहुत कम चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं है. जैसे जस्ट make us brief about the music. First, Alauddin Khilji. So the court of Alauddin Khilji was decorated by the two important music experts and singers of the time. One was Amir Khusro. Amir Khusro was a great expert. He was having a great expertise. Some scholars is even given the credit to Amir Khusro. Amir Khusro has developed certain musical instruments as well. You might have heard about somewhere. And Amir Khusro is given the credit to have invented some rags. Rags में जैसे जीलप, जैसे here you can say कि this has been maintained कि जैसे आमिर खुसरो है, तो आमिर खुसरो is given the credit to have invented some rags. Rags मतलब जो म्यूजिक का जो धुन होता है, धुन उसको बोलते हैं rags. तो म्यूजिक रागाज, तो इन म्यूजिक रागाज यू विल कम टू फाइंड कि एक राग था, उसका नाम है जीलप, दूसरा का साजगिरी, तीसरे का सरपदा. तो जीलप, साजगिरी एंड सरपदा, ये जो राग है, इसको डेवलप करने का श्रेय साजगिरी एंड सरपदा, इसको डेवलप करने का श्रेय आमिर खुसरो का है. फिर आमिर खुसरो के बारे में कहा जाता है
कि he was a great expert and he was a great connoisseur of Indian music. वो इंडियन म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन था. उसको यहां तक मानना था कि भाई इंडियन म्यूजिक में क्या मतलब स्ट्रेंथ है कि अगर आप एनिमल्स को सुना दो तो वो भी मदहोश हो जाएगा. मानी यू आर जस्ट गोइंग टू, यू कैन से you are going to sing a song, Indian song, and you are using Indian music. Even hunters were using the Indian music to enchant the deer or animals, you know. तो ये इस तरह से इंडियन म्यूजिक का काफी तारीफ करता था. एंड इट वॉज आमिर खुसरो हु इज इवन गिवन द क्रेडिट टू हैव लेड द हिंदुस्तानी म्यूजिक. मतलब ही वॉज सपोज टू बी द फादर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक एज वेल. उसने ईरानी और भारतीय धुनों को मिलाकर, मतलब while making the mix between the ragas, the Indian ragas and Persian ragas, then he could develop the so-called Hindustani music later. तो ये हुआ. और अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में ही एक महत्वपूर्ण सिंगर था, यू विल कम टू नो. उसका नाम होगा गोपाल नायक. गोपाल नायक वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट सिंगर ऑफ हिज टाइम. जैसे अब देखो, just okay, Mr. Ankur. Yes. अब अलाउद्दीन खिलजी's court, so it was decorated by the two important singers of the time. That was decorated by two important singers of the time, you know. What? So one is Amir Khusro, the second is Gopal Nayaka. Gopal Nayaka. These two singers of the time you come to know. Amir Khusro and Gopal Nayaka. So here you are informed that Amir Khusro, he was himself a great singer, and Gopal Nayaka, he came from Devgiri and he decorated the court of Alauddin Khilji. गोपाल नायक देवगिरी से आया था और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार को सुशोभित कर रहा था. देन कम्स द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. वी आर इन्फॉर्म्ड बाय अ कॉन्टेम्पररी स्कॉलर, इवन हिज कोर्ट वाज डेकोरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, बट we are not recalling the name of any notable singers at the time of Muhammad bin Tughlaq. But after Muhammad bin Tughlaq, he was Firoz Shah Tughlaq, you know. So Firoz Shah Tughlaq patronized music. Firoz Shah Tughlaq patronized music. And in spite of the fact that Firoz Shah Tughlaq was an orthodox Sunni Muslim, but in spite of that, he patronized म्यूजिक. मतलब वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, परंतु उसने भी कहीं ना कहीं म्यूजिक को संरक्षण दिया. अब इसके बाद आप देखते हो तो म्यूजिक, बहुत सारे म्यूजिक के डेवलपमेंट में आपको भक्ति और सूफी सेंट्स का नाम लेना चाहिए. भक्ति एंड सूफी सेंट्स. भक्ति एंड सूफी सेंट. तो भक्ति सेंट्स में अब देखिए, भक्ति सेंट्स में इन दिल्ली सल्तनत यू आर ऑलरेडी रिकॉलिंग चैतन्य महाप्रभु. he was the great exponent of Sankirtana system. Then comes the turn of Swami Haridas. Swami Haridas was a great exponent of Dhrupad Gaiki. Dhrupad was a form of music I have to discuss with you. Or Swami Haridas was the teacher and the some teacher of and the godfather in the field of music of Tansen, and later he even provided some basic expertise even to Baiju Babra. He was another exponent of Dhrupad Gaiki.
तो स्वामी हरिदास तानसेन के भी गुरु थे सॉरी, मीराबाई was herself, or the version of Mirabai is supposed to be a treasure of music. It is said that when Mahatma Gandhi, when the last birthday of Mahatma Gandhi was being celebrated after independence on 2nd October 1947, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू asked from Mahatma Gandhi कि बापू please tell us कि how should we celebrate your birthday, because it is the first birthday after independence. So Mahatma Gandhi replied that I simply just try to today, I just want to hear the melodious song of or the melodious bhajan of मीरा. तो मीरा का जो भजन है वो भी एक ग्रेट ट्रेजरी ऑफ म्यूजिक है. उससे पहले कबीर दास के दोहे है वो भी म्यूजिकल है, और जो गुरु नानक के शब्द है वो भी म्यूजिकल है. तो भक्ति सेंट्स ने म्यूजिक के फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया. और सूफी की तो बात ही छोड़िए, आज भी आप देखते हो सूफी गायकी है, ये भक्ति है, और ये सूफी गायकी कितना ज्यादा मेलोडियस है. देखिए सूफी का जो खानका होता था हॉर्स स्पाइस, तो इन सूफी खानका देर डेवलप्ड द न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक. यू नो व्हाट वाज द न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक? आई हैव टू इन्फॉर्म यू. The new form of music is the ghazal and qawwali. Ghazal and qawwali, this form of music were developed in Sufi खानका. जो सूफी हॉर्स स्पाइस है उसमें गजल और कव्वाली जैसे म्यूजिक सूफी हॉर्स स्पाइस में डेवलप करता था, इवॉल्व किया था. गजल एक इंडिविजुअल लेवल पर गाया जाता था, और जो कव्वाली है, सो कव्वाली वॉज बीइंग संग कलेक्टिवली. गजल है उसका लिटरल मीनिंग है कि प्रिय के साथ वार्ता, टॉक टू एंड द बिलवेड वन. एंड जब वही वार्ता, वही डिस्कोर्स कलेक्टिव हो जाता था तो कव्वाली का रूप ले लेता था. तो इस तरह से आप देखते हो कि सूफी सेंट्स ने अपने ढंग से म्यूजिक को डेवलप किया. अब रीजनल सेंटर्स पर भी आपको म्यूजिक दिखेंगे. रीजनल सेंटर्स, तो रीजनल सेंटर्स में आप लीजिए ग्वालियर. तो ग्वालियर में मानसिंह तोमर म्यूजिक के बहुत बड़े एक्सपोनेंट माने जाते थे. एंड मानसिंह तोमर हैज कंपोज द फेमस टेक्स्ट दैट इज कॉल्ड मान कौतूहल ऑन म्यूजिक. मानसिंह तोमर. कम टू गुजरात, so you can say a group of experts on music, they just composed a text गुनियात उल मुनिया. एंड जो इब्राहिम आदिल शाह था जौनपुर का, उसने भी म्यूजिक को अपने ढंग से पैट्रोनाइज किया. जैसे आपको आगे सूचना मिलती है गुनियात उल मुनिया, तो इन गुजरात में लिखा गया. और फिर इब्राहिम शाह सरकी है, ही वॉज हिमसेल्फ great patron to music. He had just written a text Sangeet Shiromani. During his reign, treatise Sangeet Shiromani was composed. मतलब a group of experts in Jaunpur, they wrote, in my study material I have already given, but you need to go through it. So they just wrote the Sangeet Shiromani. And his successor Hussain Shah Sarki is given the credit to have invented a new form of music that is called Khayal. About Khayal, there is some controversy because some scholar is not giving credit to Hussain Shah Sarki, rather they are giving credit to Amir Khusro, but even you can say Hussain Shah Sarki should be given some credit. So, and so in this way you can say the development of music under Sultanate period. Of what under Mughal period? You will come to know कि बेसिकली ड्यूरिंग मुगल पीरियड बाबर वॉज हैविंग द स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, यू नो, बट बाबर वॉज सो मच बिजी इन वॉर एंड मिलिट्री कैंपेन्स कि हार्डली डिड ही गेट द टाइम टू पैट्रोनाइज म्यूजिक ऑन मैसिव स्केल. बट इट इज सेड दैट कि व्हेन एवर इन कोर्स ऑफ हिज मिलिट्री कैंपेनिंग, व्हेन एवर he found some time, he preferred to hear some music.
तो बाबर के पास टाइम नहीं था। बाबर म्यूजिक समय समय पर सुनता था और उसको एंजॉय करता था जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। देन कम्स द टर्न ऑफ हुमायूं। इट इज सेड दैट द कोर्ट ऑफ हुमायूं was decorated by 29 great singers 29 singers, and it is said that ki Humayun on every Monday and Wednesday used to organize a music concert on every Monday and Wednesday in a week. And in this music concert, he himself enjoyed music, and he also invited some notable people and notable persons to participate in this program. So in this way you can say he patronized music. Then comes the turn of Akbar. Akbar was having a great fascination for music, and Abul Fazl informs us that कि Akbar's court was decorated by 36 great singers. मतलब अकबर का जो कोर्ट है उसमें जो 36 बड़े सिंगर्स है उस कोर्ट को डेकोरेट करते थे। उसमें आप जानोगे 2 बड़े सिंगर्स थे, 2 नहीं 3 कह सकते हो। एक तानसेन was such a great singer कि अबुल फजल has even mentioned that कि since the 1000 years मतलब हिंदुस्तान could not manifest such a great singer। तो तानसेन। बैजू बावरा, he was also an exponent of Dhrupad Gayaki, that is called at that time in Mughal court the Dhrupad Gayaki. That was a form of Hindustani music, Dhrupad Gayaki. So it was much important and significant, you know. So Abul Tansen, apart from Tansen, you will find another name Baiju Bavra, and third name is Baj Bahadur of Malwa. You will find here the 3 names here. Baj Bahadur of Malwa. And it was same Baj Bahadur, he was the ruler of Malwa earlier, and his wife was Roopmati. Later Baj Bahadur was defeated and Malwa was conquered by Akbar. It was accidentally Roopmati died because there was some Adham Khan and he played the very villainous role, but that is another story. Roopmati was also a singer, but Baj Bahadur later joined Mughal court as a singer. So he was also a great singer, you know. So, and Tansen received training from Muhammad Ghaus. He was a Sufi saint, and he was a great singer himself. So he gave training to Tansen. And Tansen also got training from Swami Haridas, I have informed you. And Dhrupad Gayaki, you can say, and Tansen is given the credit to have invented some ragas. What was the ragas? So Miya Ki Malhar, Miya Ki Tori, and Rag Darwari. Miya Ki Malhar, Miya Ki Tori, and Rag Darwari, these were the certain ragas which were invented by whom? Tansen. Then at the time of Jahangir, you will come to know that Jahangir, although primarily interested in paintings, also patronized music. Notable singers in his court were Chhattar Khan, Khurram Dad, Bilas Khan, Tansen's son. My students, here you are informed that कि जो जहांगीर है वो मुख्य रूप से उसको चित्रकला या पेंटिंग्स में रुचि थी, परंतु म्यूजिक को भी उसने पैट्रोनाइज किया. एंड यू विल फाइंड हियर द 3 नेम्स ऑफ द सिंगर्स, छत्तर खान, खुर्रम दाद एंड बिलास खान. बिलास खान वाज द सन ऑफ तानसेन. देन एट द टाइम ऑफ शाहजहां, इवन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, म्यूजिक कंटिन्यू टू थ्राइव इन द मुगल कोर्ट. म्यूजिक उसके बाद भी मुगल कोर्ट में थ्राइव किया. लाल खान, सन इन लॉ ऑफ बिलास खान, लाल खान सन इन लॉ ऑफ बिलास खान रिसीव प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम शाहजहां. जो रिसीव जो है उसने प्रोटेक्शन है और सपोर्ट है उसने शाहजहां से मिला. एंड द इंपेरर हिमसेल्फ हैड ए स्पेशल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिंगिंग. जो इंपेरर है उसको भी एक सिंगिंग के प्रति एक गहरी रुचि दिख रही थी. नेक्स्ट वन, औरंगजेब. तो औरंगजेब नोन फॉर बैनिंग म्यूजिक. औरंगजेब ने म्यूजिक को अपने ढंग से बैन कर दिया.
कंसीडरिंग इट नॉन इस्लामिक पैराडॉक्सिकली। जैसे औरंगजेब के बारे में तो आप जानते ही हो कि म्यूजिक को बैन कर दिया, लेकिन आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि इफ समवन इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्स्ट ऑन म्यूजिक वर रिटन एट द टाइम ऑफ औरंगजेब. इट इज रियली एन आयरनी. एंड ड्यूरिंग हिज रेन Fakirullah. There was Fakirullah, a scholar, translated the book Rag Darpan. Actually, there was important, you can say, a scholar who was having the knowledge of expert of music. So he translated a text on music that is called Rag Darpan into Persian during this period. And interestingly, music still received patronage in the Mughal haram during Aurangzeb's rule. अब देखो, औरंगजेब ने भले ही कोर्ट में उसको बैन कर दिया हो, परंतु मुगल हरम में म्यूजिक चलता रहा था. अब देखो, मोहम्मद सारंगीला के टाइम में, एट द टाइम ऑफ मोहम्मद सारंगीला, विल कम टू रियलाइज कि at the time of Muhammad Sarangila, I will come to know कि music still flourished, and particularly during the time of Muhammad Sarangila, you can say, जो earlier you can say the one form of music which was more prominent under Akbar and his successors, that was Dhrupad. But at the time of Muhammad Sarangila, in place of Dhrupad, another form of Hindustani music, that is called Khayal. So Khayal became more prominent. And then you will come to know कि two important singers decorated the court of Muhammad Sarangila, and that is Sadarang and Adarang. These were the two important singers who decorated the court of Muhammad Sarangila. So let us here now move. Indian music style. Indian styles of music, you can say. There are two main styles of Indian music, Hindustani style and Carnatic style. The term Carnatic was first used by Vidyaranya, who served as the prime minister of the Vijayanagar Empire in the 15th century. While these two styles share similarities, they also exhibit notable differences. It is commonly believed that the Hindustani style developed in isolation from Carnatic style under the musical influence of Amir Khusro. However, the reality is that the distinction between these two styles emerged not solely due to the influence of any specific musician, but rather as a result of regional factors. The Hindustani style evolved in North India, whereas the Carnatic style developed in Dravidian linguistic region of South India. Although the ragas used in both Hindustani and Carnatic styles share similar names, their tonality, ताल and rhythm differ significantly. जैसे देखो, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक देखो, बेसिस तो हिंदुस्तानी, देखो दो सॉर्ट ऑफ म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक. So basis is the same, but if you are using the term Hindustani music, so basically you can underline the growing influence of Islam or Indo-Islamic or the Persian influence on Hindustani music. You will find the Persian influence on Hindustani music, and so it was the Persian influence, not simply Amir Khusro, but it was Persian influence which made Hindustani music different from Carnatic one. And if you will talk about the styles of Hindustani music, the Hindustani music was having different forms. What were the forms, you know? That is Dhrupad, Khayal, Ghazal, Thumri and Tappa. 1, 2, 3, 4, 5. Dhrupad was the main, you can say, it was patronized in Mughal court under Akbar and his successors, you know.
So Dhrupad Gayaki is the very prominent sort of Gayaki here. There in the Dhrupad music you will find there was the use of alap. आलाप का मतलब जैसे आपने कभी म्यूजिक सुना होगा तो आ करके आवाज बहुत ऊंचे ताल पर, ये आप YouTube पर भी सुन सकते हो। ध्रुपद म्यूजिक करके उसको डालना, तो उसको उस म्यूजिक को थोड़ा 1 मिनट सुनकर देखना कि ध्रुपद कैसी होती है। जो ख्याल है वो ख्याल उससे थोड़ा सॉफ्ट होता था, और जो गजल है उसको कहते हैं दर्द और पराजय के गीत। आपने महसूस किया होगा गजल के बारे में कि शाम का वक्त हो, जाम हो, मतलब सामने कुछ दर्द हो, कुछ पराजय हो, तो इस तरह का फीलिंग्स के साथ लोग गजल गाते हैं। गजल में एक दर्द भरे, और जो ठुमरी है वो ठुमरी भी एक कोमल टाइप की गायन होती है जो महिलाएं करती थी। और टप्पा, टप्पा में है कि इसका रिदम बहुत तेज होता है, जैसे पंजाबी म्यूजिक में देखोगे टप्पा चप्पा चप्पा चरखा चले। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक है। और जहां तक कर्नाटक म्यूजिक का सवाल है, तो बेसिस ऑफ कर्नाटक म्यूजिक वाज प्रिपेयर्ड बाय अलवार एंड नैनार सेंट्स। अलवार एंड नैनार सेंट्स प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, but it was given a formal shape by a Bhakti saint Purandar Das in 15th century. So Carnatic music was given the formal shape by Purandar Das in 15th century, you know. So in this way we have to inform you. Now on some different topics we have to move. बफरिंग के रिगार्डिंग आप मैसेज कन्वे कर दीजिए कि 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा इशू। अच्छा, ये कौन उधर से आया है क्या? बात हुई। अब देखिए, जो बफरिंग का इशू है, वो बफरिंग का इशू 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे मैनेजमेंट से पता चला है। सो आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल इन 1 and 2 days. सो प्लीज हैव पेशेंस। थोड़ी सी दिक्कतें तो आपको है, और चूंकि आपको दिक्कत है तो मुझे भी दिक्कत है, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर द कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट्स। और बीच में हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन टूट रहा है, तो परेशानी तो हमें भी हो रही है, लेकिन 1-2 days में रिजॉल्व हो जाएगा। तो हाँ, वैशाली ठुमरी इज ओनली फॉर वुमेन? नहीं, मेल भी है, मेल भी है। वैशाली ऐसा नहीं है, मैंने विमेन इसको ज्यादा प्रेफर करती है, लेकिन मेल भी है, ये दोनों के लिए कॉमन है। और जो गजल है वो भी दोनों के लिए, सबके लिए कॉमन है। ध्रुपद प्राय मेल ही गाते हैं। अब नेक्स्ट वन सब टॉपिक, आमिर खुसरो embodied the essence of Indo-Islamic culture through his life and contributions. अब this is on the Amir Khusro, a specific contribution you people have to go through at your own, I think. कि the ideological clash between Hinduism and Islam gave rise to conservative Islamic thinkers like Barni, whereas constructive assimilation between Hinduism and Islam gave rise to liberal thinkers like Amir Khusro. देखो, जैसे इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच अगर संघर्ष और टकराहट देखोगे तो वो पैदा करता है बर्नी जैसे कट्टर चिंतक को। और अगर इस्लाम और हिंदुइज्म के जो रिजेनरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एसिमिलेशन को देखोगे तो आमिर खुसरो जैसे थिंकर्स को पैदा करता है। आमिर खुसरो इन पर्टिकुलर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन promoting the indigenization of the Muslim elite class, while the Turkish ruling class had previously regarded Ghazni and Gordes as their heritage. Khusro embraced Delhi as his native land. He composed numerous songs in praise of Delhi, referring to it as Hazrat-e-Delhi and considering it a home for refugees. This perspective resonated during the partition of India when Delhi was once again identified as a refuge for displaced individuals. अब देखो, आमिर खुसरो आया था कहां से? वो गोर और गजनी को भूल चुका था। दिल्ली को उसने हजरत दिल्ली कहा है, कहा कि यहाँ का जो हवा है वो भी खुशगवार है, मतलब यहाँ के हवा में एक ताजगी है। तो दिल्ली की तारीफ करता है इतना ज्यादा, उसको तूतिए हिंद कहा जाता था। तो मेरे विचार से इसको आप लोग पढ़ लेना, ये बिल्कुल ही आमिर खुसरो का अचीवमेंट के ऊपर है।
और चूंकि आपके कल्चर में अमीर खुसरो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सो कैन आई होप दैट कि जो अमीर खुसरो है उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेव राय इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। देखो विजयनगर और कृष्णदेव राय पर थोड़ा सा आज तो भेजा है आपने मैटर मिस्टर अंकुर, आज मैं कृष्णदेव राय पर मैं कल करूंगा। इस कृष्णदेव राय के मैटर को कल काट के उसमें मिला देना है ना। आज देखो मैं एक रूलर जैनुल आबिदीन के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो कश्मीर, तो कश्मीर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्टेंसस रीजन। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ चांस कि on Kashmir and a ruler of Kashmir, Jainul Abidin, he was the medieval ruler and he was very illustrious ruler. So it is simply a matter of chance कि in GS so far they have not asked you, but anytime they can ask you, particularly because Jainul Abidin was having a very liberal religious tradition. So let us start in Jainul Abidin, you know, and here I have to inform you कि he was a great ruler of his time, and particularly in Kashmir you can say that three personalities are such which could work as the symbol of Hindu-Muslim amity. One is Jainul Abidin, second one is Lal Ded, the Seva saint, you know, I have just discussed earlier in Bhakti movement, Lal Ded, the women saint. And third is Nuruddin. Nuruddin was a Sufi saint. He was the founder of Rishi sect. Even he was a great exponent and the great, you can say, supporter of the Hindu-Muslim amity. So Jainul Abidin, he came to power in Kashmir just after the death of a very cruel king that was called Sikandar Shah. Sikandar Shah was a very cruel king. He was a worst persecutor of Hindus, and he was a very orthodox Sunni Muslim, and he was guided by his own Prime Minister Shuha Bhatt. Unfortunate condition was that Shuha Bhatt was himself a Hindu, but now he was a Muslim convert, and he was giving suggestion to Sikandar Shah to introduce the very cruel policy towards Hindus of Kashmir. And Sikandar Shah did so. Sikandar Shah just circulated an ordinance and order to the Kashmiri Pandits to vacate the valley. He demolished the temples. He you can say, and you can say he persecuted Hindu on massive scale. So this Kashmiri Brahmins started to vacate the valley, you know. But he was followed, and his period he was succeeded by a very liberal king, Jainul Abidin. And Jainul Abidin was he was characterized as the Akbar of Kashmir. He removed jizya tax. उसने जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया. He re-invited the Kashmiri Brahmins very politely to return to the valley as the valley is their home. He renovated and restored the temples. Even Abul Fazl had mentioned that during his period in Kashmir there was 150 temples, you know. So not simply that, he even brought some restriction over the cow slaughter in order to appease the Hindus, you know. Among his 4 wives, the 2 wives were Hindus. He was a great patron to music, in spite of the fact that it was un-Islamic. He gave patronage to, apart from Persian language and literature, he patronized even Kashmiri language and Sanskrit literature. He gave patronage to Hindu scholars as well. So he was a very illustrious king, and his tradition, if his tradition could have been followed in Kashmir, so Kashmir could have really a haven for Hindus and Muslims together. So just come to this point that there have been rulers in Indian history whose policies transcend
their contemporary era and become significant for all ages and regions. One such ruler was Zainul Abidin, who ruled Kashmir in 15th century. Zainul Abidin succeeded his brother Sikandar Shah to the throne in 15th century. He inherited a legacy of communal tensions under the rule of Sikandar Shah. Temples were demolished and Kashmiri Pandits were expelled due to his divisive policy. Zainul Abidin embarked on a process of reconstruction. Amidst his destruction, he restored Hindu temples and resettled Kashmiri Pandits in the valley. Respecting the religious sentiments of Hindus, he abolished the jizya tax imposed on them. Additionally, he enacted a ban on cow slaughter. He didn't let religion hinder the development of art and literature. Zainul Abidin himself had the knowledge of Sanskrit, Kashmiri, Tibetan and Persian languages. He patronized the syncretic culture of Kashmir and commissioned the writing of the next part of the Raj Tarangini, a significant work of Kashmir by a Sanskrit scholar named John Raj. Furthermore, he encouraged the appointment of Hindus in the state services. Despite not being of their faith, he also extended his patronage to music. Due to these notable contributions, he has been referred to as Akbar of Kashmir. What is intriguing is that Zainul Abidin demonstrated a rare example of Hindu-Muslim harmony in a remote region of India, a phenomenon that was scarce elsewhere. During this period, while bloodshed occurred in the name of religion in West Asia, Central Asia and even in Europe, which claimed to be civilized, Zainul Abidin stood as an exception. So you have to go through it now. In conclusion, Zainul Abidin remains as relevant in the present and future as he was in the past. It is disheartening that although we have inherited communal tensions in Kashmir, we have failed to embrace Zainul Abidin's legacy as a solution. Consequently, religious conservatism, conflict and bloodshed continue to be prevalent in Kashmir today, while the true solution in the form of Zainul Abidin remains absent. Describe the cultural achievements of Sultan Ibrahim Adil Shah. Ibrahim Adil Shah was the ruler of Bijapur. You people have to go through it at your own. Dara Shikoh. So even Dara Shikoh is the great character and he is in the limelight presently. So I hope that you can find a question on Dara Shikoh as well. So I have placed a question on Dara Shikoh. You will find the term Dara Shikoh or Dara Shukoh embodied the living essence of the Ganga Jamuni culture. Ganga Jamuni culture means composite culture. What is Ganga Jamuni culture? So that is composite culture of India. Composite culture. The same, both are the same. That Hindus and Muslims had developed in India while coexisting for the past approximately 600 years. The foundation of religious harmony in India was laid by Bhakti and Sufi saints as well as great emperors like Akbar. Dara Shikoh not only embraced this legacy but also sought to further enrich it. Deeply influenced by the philosophy of the Sufi saint Muhammad Ghaus, Dara Shikoh embraced the principle of Bahr-ul-Hayat, which emphasized the unity of all religions. Based upon this principle, he put forth the theory of Majm-ul-Bahrain, symbolizing the convergence of diverse beliefs. In an era marked by religious frenzy, Dara Shikoh endeavored to find common ground among different religious sects was a remarkable achievement. देखो, दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि वह मोहम्मद गौस का फॉलोअर था. मोहम्मद गौस का फॉलोअर ने मोहम्मद गौस से इंप्रेस था. मोहम्मद गौस ने हिंदू मुस्लिम अमिटी पर एक थियरी दी थी, उसका नाम है बहर-उल-हयात. और बहर-उल-हयात को ही इवॉल्व दारा शिकोह ने अपने नाम से किया, उसका नाम है मज्म-उल-बहरीन. मज्म-उल-बहरीन, यू नो. तो जो मज्म-उल-बहरीन है, सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मज्म-उल-बहरीन? कि ऑल द रिवर्स आर मर्जिंग इन द सेम ओशन. मतलब जितनी भी नदियां हैं वो आके समुद्र की धारा में मिलती है.
ये दारा शिकोह का था। एंड अकबर हैज कंसीव्ड हिंदू मुस्लिम अमिटी इन थियरी, in theory because Akbar was not literate, so he laid foundation of ibadat khana, he started religious discourses, etc., but he was himself not a scholar, he himself was not, you can say, even literate, not educated. But Dara Shikoh was well versed in all the important, even Sanskrit language, Persian language, Arabic language. He was a great scholar of his time. And he even tried to search Hindu-Muslim amity with textual support. Do you know? Kavindacharya, he was an important Sanskrit scholar of his time and a saint at Banaras. So he invited Kavindacharya with a group of disciples, and with the support of Kavindacharya, he got 52 Upanishads translated into Persian. मतलब 52 उपनिषद की पर्शियन में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कराने का श्रेय दारा शिकोह को है। एक बात मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो उपनिषद को जान सका वो ओरिजिनल संस्कृत से नहीं जाना, दारा शिकोह के ट्रांसलेशन से जाना। इन वेस्टर्न वर्ल्ड में इट वॉज द ट्रांसलेशन ऑफ दारा शिकोह व्हिच पब्लिसाइज्ड उपनिषदास, और he himself wrote a text and translated a text, Yog Vasishtha. योग वशिष्ठ। अब देखो योग वशिष्ठा इज द व्हाट इज द टेक्स्ट, सो आई हैव टू इन्फॉर्म यू रिसेंटली मुजफ्फर आलम हैज written a text on Sufi saints, and it is a matter of chance in the prelims examination of 2021, being inspired from the same text, there was a question in prelims. अब क्या prelims में क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखो योग वशिष्ठ का संस्कृत से पर्शियन में पहला ट्रांसलेशन अकबर के टाइम में हुआ था, अकबर के टाइम में, और अकबर के टाइम में जो उसका ट्रांसलेशन किया था उसका नाम था निजामुद्दीन पानीपति, उसने योग वशिष्ठ का ट्रांसलेशन किया था। लेकिन 50 इयर्स के बाद दारा शिकोह ने दोबारा उसका ट्रांसलेशन किया। तो इसीलिए दिस इशू वाज रेज्ड बाय मुजफ्फर आलम कि व्हाई डिड दारा शिकोह डू सो, बिकॉज उसका ट्रांसलेशन तो हो चुका था, फिर करने की क्या जरूरत थी। तो देखो अब इसमें अब कंप्लीट कल्चर है दारा शिकोह की मंशा देखिए। योग वशिष्ठ का मतलब हुआ कि जो ऋषि वशिष्ठ थे और लॉर्ड राम, राजा राम के गुरु थे, तो जब राम का कोरोनेशन होने वाला था तो वशिष्ठ एक गुरु होने के नाते राम को शिक्षा दी थी कि एक आदर्श राजा को किस प्रकार का होना चाहिए, हाउ डिड एन आइडियल इंपेरर शुड हैव बिहेव्ड। तो ये राम के लिए प्रिसेप्ट था वशिष्ठ का, और उसको दारा शिकोह ने ट्रांसलेशन करके ये सिग्नल देना चाहा कि मैं भी राजा राम के आदर्श का पालन करूंगा एक रूलर के रूप में। आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन आइडियल रूलर, सो ही ट्राइड टू टेक सम एजुकेशन फ्रॉम योग वशिष्ठ। अब जब ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि निजामुद्दीन पानीपति ने किसके टाइम में योग वशिष्ठ का ट्रांसलेशन किया, निजामुद्दीन पानीपति हैज ट्रांसलेटेड योग वशिष्ठ फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन अंडर व्हिच रूलर, चॉइस ए अकबर, चॉइस बी शाहजहां, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां, चॉइस डी औरंगजेब। तो एक्चुअली लोगों का दारा शिकोह का योग वशिष्ठ याद है, तो दारा शिकोह ने अगर योग वशिष्ठ का ट्रांसलेशन किया तब तो फिर शाहजहां हो जाएगा, लेकिन निजामुद्दीन पानीपति 50 इयर्स पहले कर चुका था, इस बात को मुजफ्फर आलम ने हाईलाइट किया हुआ था। तो इसका आंसर होता अकबर, क्योंकि निजामुद्दीन पानीपति अकबर का कोर्ट स्कॉलर था। तो यही कंफ्यूजन क्रिएट किया था इस क्वेश्चन में। सो माय स्टूडेंट, दिस इज अबाउट दारा शिकोह एंड यू पीपल आर सपोज टू गो थ्रू इट। दारा शिकोह, रिलीजियस दारा शिकोह। Then what are the reasons behind referring to 16th century India as the Indian Renaissance? इसको इंडियन रेनेसां क्यों 16th century इंडिया को कहा जाता है, ये पहलू है। तो यही लास्ट आपका
यहाँ पर पहलू है, तो ये मैं लास्ट इसको कर लूँगा और फिर मैं कृष्णदेव राय भी कल कवर कर दूंगा. बट मैं अंकुर, टुमारो यू हैव टू सेंड सम स्टडी मटेरियल ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल. ओके okay my friends, I'll send you some extra material tomorrow. So I'm stopping here. Thank you very much. I'll see you.